Assalamu alaikum. Let's start topic for today. We'll have to continue with post-Mauryan period. Yesterday we discussed some portion of the post-Mauryan period, especially with respect to these foreign powers. We discussed significant portion of that foreign invasion. Why was it important? What kind of importance they put? What is the importance in our Indian history? We discussed some portion of that. But post-Mauryan period is too lengthy a period. It demands too much of a time. It demands too much of vitality. There's too much vitality present in this post-Mauryan period. That's why we cannot miss, or we cannot attempt to miss any part of this northern history as well as southern history. Though we discussed some portion of the northern history yesterday, now let's move and we discussed Satavahanas, the Deccan, the dynasty in the Deccan yesterday. Today we'll continue same with the we'll continue the same post-Mauryan period, but this time we'll be discussing about the big, almost 6th century period, the Sangam period, which is very important for your examination because most of the things that you will see, observe in this Sangam period will be there will be a contrast between northern part of the society as well as the southern part of the society. The things that had developed in northern society were not actually present in that form in southern society, and the things that were present in the southern society were not fully impacted by the northern. Though there will be some portions where northern influence would be seen, but not exactly. That's why reading it, studying it distinctively makes it very important. The Sangam period carries a lot of importance in UPSC or JKAS syllabus, or in any case SSB syllabus. So let's start without wasting any time. Let's start Sangam period. Sangam period. When does this period start and when does this end? If you analyze a general knowledge book, you will be seeing it that they will be referring it to a period from 1st century AD to 300th century AD. But the period is much more than that. The period spreads from 300 BC to 300 AD. That's why I used 6 centuries for this period. This spreads from 300 BC to 380. Why Sangam? Sangam means meeting, because lot of things developed through meetings of various priests, sages, kings around this period, which gives us information about the political history, social history, geography and cultural history of Tamil land. Here in Sangam period, we'll be knowing about Tamil land. Tamil land does not mean Tamil Nadu. It means extremes of southern India. You'll have to make clear this thing. Now let's study. We'll go with first political history, then we'll go to much more important part, that would be Sangam literature, which is very important for your questions. Very important. Now let's discuss. We'll go with the political history of the Sangam period. When we say political history, we'll be studying about 3 dynasties here. When we studied Ashoka, we saw the during Ashokan times, the Mauryan Empire almost covered entire subcontinent, spreading from north to south. But we said there, the extremes of the south were occupied by 3 different chiefs or 3 different kingdoms. They were Cholas, Cheras, and Pandyas. We'll be studying here Cheras, Cholas, Pandyas.
We'll not be discussing each and everything about Cholas, Cheras, and Pandyas, but what I consider important for your examination, I have handpicked those points. I'll be elaborating only those points. If we try to analyze each and every point, this will only act as a burden on your brain, because those things are not necessary for you to remember as far as examination is concerned, since we are not into the academic examination, but we are into the competitive examination. Here not study, but smart study makes us to win the race. Now let's study what becomes important for us to excel in this examination. One thing, make clear that these chiefs, Chera, Cholas, and Pandyas, we find one thing very common. They will have two capitals. What would they have? They will have two important centers or two capitals. You will observe with each of the three, Cheras, Cholas and Pandyas. आप तीनों के साथ एक common चीज देखोगे कि इनके पास दो या centers होंगे या दो capitals होंगे. One would be inland center and other would be port. Now, if we analyze Cheras, let us see what was its inland capital. Its inland capital was Vaji. Its capital was Vangi. It was inland capital. Can you locate on the present day map where Choras actually reside? If you do not know, you don't be surprised when I mention their important ports. You will do it yourself. You will locate them on modern India map. Cheras. What was their inland capital? Vanji. What was their important port center? Muziris or and Tondai. Ports, two important ports which are important in Cheras are Muziris and Tondai. Where does Muziris actually lie? Can you note it? Do you know that? Kerala. Means Chera was the Chera kingdom or the Chera chiefs were located around Kerala, because Muziris is still a port in Kerala. These southern kingdoms had important emblems associated with them, and the emblem that was associated with Chera was of bow. This is just a factual information. Maybe they may ask about facts or they may ask about concepts, but here we'll try to build upon the factual information. Then we'll move to Sangam literature part, where we'll try to use our concepts to correlate with questions. Which was important Chera ruler? Singutava was important Chera ruler. Who? Singutava. I will not be discussing about their founder. I'll be only discussing about their important rulers. He was also known as Red Chera. What? Why is he famous? Why is he important? He invaded north. What did he do? Politically. Politically he was famous because he invaded north. What did he do? He invaded north and even crossed Ganga. इसने क्या किया? नॉर्थ में इन्वेजन की. एक तो साउदर्न किंगडम था ना, कहाँ पहुंचा इन्वेजन करने? नॉर्थ में, और गंगा तक को क्रॉस किया. इवन क्रॉस इट. उसके लिए तो छोड़ो, उसके लिए भी फेमस नहीं था, मगर ये फेमस इसलिए ज्यादा था बिकॉज ही फाउंडेड पत्नी कल्ट.
He founded Patini cult, which is very important, which is related to worship of this. You may ask a question about this Patni cult. What's this Patni cult about? This Patni cult says us it is related to worship of wife of Sengutawan, Kanga, this Kanagi. Patni cult is related to worship of his wife, whose name was Kanagi. Very important in that regard, this red Chera or Sengutawan. Now, let we move to Cholas. I am only discussing, I said it first, I will be discussing only important points with respect to their political history, because you don't need to remember each and everything. You don't need to get an extra burden on yourself. Cholas. What was their capital? You must be remember it. It was inland capital was Urayur. What was Urayur famous for? Can you know? Still it is famous for that thing. It's present in Tamil Nadu. These Pandya and Cholas were located around Tamil Nadu, Cheras around Kerala. And Urayur is still famous in Tamil Nadu. What is it famous for? You must be knowing it's famous for cotton trade, cotton textiles. Famous for, I will be writing it in brackets, cotton के लिए. किसके लिए famous है? Still, yes, still. Cotton textiles के लिए famous है. Means यहाँ से cotton का trade उस वक्त होता था. ठीक है? और इसके दो मेन पोर्ट्स कौन कैसे थे? एक इसका था कावेरी पट्टनम. क्या था इसका पोर्ट इंपॉर्टेंट? कौन सा पोर्ट? कावेरी पट्टनम, जिसका दूसरा नाम क्या है? पोहार. और अगर हम इसके इंपॉर्टेंट रूलर, और इसका एम्बलम क्या था? चोला का एम्बलम क्या था? टाइगर. क्या था? टाइगर. अगर हम इसके इंपॉर्टेंट रूलर की बात करेंगे, किसके? चोलास के. कौन सा था इंपॉर्टेंट रूलर इसका? इट वॉज कारिकला. कारिकला. कौन सा था? कारिकला. Why is it famous? Why is he famous? देखो, ये फेमस है दो चीजों के लिए. ये फेमस है, पहले ही इसने जो एक पोर्ट था, एक कावेरी पट्टनम, इसको फाउंड किसने किया? इसी ने, कारिकला ने. किसने? He founded पोहार. I will be writing in short. पोहार means कावेरी पट्टनम. ठीक है? और इसने रिवर पे एम्बैंकमेंट बनाई ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की, श्रीलंका स्लेव्स के थ्रू. कावेरी रिवर पे क्या बनाई इसने? एम्बैंकमेंट. क्या? कितने किलोमीटर की? 100 किलोमीटर की. आप देखिए. और इसने कौन से क्या इसने इस्तेमाल, कौन से स्लेव्स, कहां के स्लेव्स इस्तेमाल किए? श्रीलंका के स्लेव्स. 1200 श्रीलंकन स्लेव्स का इस्तेमाल इसने किया, कारिकला ने, वो एम्बैंकमेंट बनाने के लिए. इसलिए फेमस बन जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट रूलर बन जाता है अपने वक्त का. Should I rub it? आपने कॉपी किया? Now I'll be discussing about Pandyas.
पांड्याज वो जगह है जिसको पहले ही मैगस्थनीस ने जिसको एक किया था अपने इसमें रेफर. मैगस्थनीस रेफर्ड इट. as land of pearls. Land of pearls. इसके लिए जो इम्पोर्टेंट कैपिटल है वो कौन है? मदुराई. मदुराई ही वो जगह है जिसमें फर्स्ट और सेकंड संगम हो गए थे. हाँ, इसमें मदुराई ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इनलैंड की तो बात अभी हम, और ये तो इनलैंड कैपिटल थी ना मदुराई, और जो पोर्ट कैपिटल थी वो कौन थी? कोरकाई. इनलैंड की थी मदुराई. जो पोर्ट कैपिटल कौन थी इंपॉर्टेंट? कोरकाई. और यही कोरकाई फेमस फॉर पर्ल्स है. पर्ल्स के लिए यही फेमस है. कौन सी जगह? कोरकाई. देखो, मैंने वो स्टेटमेंट पहले जो बताई कि these three kingdoms, what we'll observe in general perception कि they will have two capital or two important centers. देखा हर जगह inland capital देखी, और सब में एक और important port पाया जाता था which was famous, और उनमें कुछ famous. अगर मैं आपको सिंपल यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, among the three kingdoms of the south Megasthenes referred to dash, आपको क्या बताना है? पांड्यास. वो मीन्स यहां से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है. द संगुतवान, द रेड चेहरा इज फेमस फॉर, फिर डिफरेंट ऑप्शंस. मीन्स ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं. चांसेस कम है मगर बन सकते हैं क्वेश्चंस. यू नेवर नो, दे आर गोइंग टू आस्क एनीथिंग इन प्रिलिमिनरी. यू नेवर नो व्हाट आर दे गोइंग टू आस्क. तो यू डोंट हैव टू बी सरप्राइज्ड दैट इंस्टेंट कि क्वेश्चन कहां से आ टपका. पढ़ना इसलिए हर किसी चीज को का आइडिया होना बहुत ही जरूरी है. नाउ लेट्स मूव फर्दर. और इसी पांड्या का जिक्र कहां किया गया है? रामायण और महाभारत में भी इसी पांड्या का जिक्र है. और इनका जो इंपॉर्टेंट रूलर था उसका नाम था नेंदुजुलिया. क्यों इंपॉर्टेंट था उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. और अगर इतना भी याद नहीं रखोगे कि इनका इंपॉर्टेंट रूलर नेंदुजुलिया था, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, नेंदुजुलिया. Now let's move to very important part of this Sangam period, that is discussing about Sangam literature. Very important, very 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 important. Huh? Emblem, it is fish. One thing I forgot before moving to this Sangam literature, let me tell you, apart from having three important points, I would say that first important thing I already said, पहले ही बोल दिया वो चीज़ कि इनके पास दो पॉलिटिकल सेंटर्स, दो कैपिटल्स पाई जाती थी. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन पे ज़्यादातर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे लिखी गई है और जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, द चीफ्स, वो आप लिखिए, chiefs did not collect regular taxes. Means अभी chiefs क्या नहीं कर रहे थे? They did not collect regular taxes. यही स्टेटमेंट जब फिर एग्जाम में पूछी जाएगी तो हम सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री और थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं और हमारे पास इस चीज का कोई इल्म नहीं आता और यहाँ जाके इंसान फंस जाता है. सिंपल स्टेटमेंट उठाई गई है एनसीईआरटी से. आपको एक क्रिटिकल रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम पास करने के लिए जब आप नेशनल और स्टेट लेवल के हाईएस्ट एग्ज़ाम के लिए compete कर रहे हो. The chiefs, when I say they, I'll be referring here the chiefs. They did not collect. इससे पहले हमें हर जगह देखा they collected taxes. हाँ, यहाँ क्या देख रहे हैं? They did not collect.
regular taxes. Rather, they were dependent upon tributes and gifts. वो आप खुद जोड़ेंगे, ठीक है ना? वो लिखने की जरूरत है मुझे? और नाउ ये हमें पता होनी चाहिए, क्या इनके पास मिलिट्री प्रेजेंट थी? हाँ, हम बोलेंगे मिलिट्री, इनके पास मिलिट्री प्रेजेंट थी और ये मिलिट्री एक्सपेडिशन भी करते थे। इसलिए मैंने बोला संयुक्त ने कहाँ इन्वेड किया? नॉर्थ को। विदाउट मिलिट्री इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। वुड इट हैव बीन पॉसिबल? नो। क्या करेंगे, मिलिट्री के बगैर तो पॉसिबिलिटी था। तो इनके पास मिलिट्री थी और उस मिलिट्री नेबरिंग एरियाज को एक्सपेडिशन करते थे अपनी नेबरिंग एरियाज में और वहां से ट्रिब्यूट्स कलेक्ट करते थे। क्या करते थे? ट्रिब्यूट्स कलेक्ट करते थे। This is all about which is very important for your political history of the Sangam period, that is about Cholas, Cheras and Pandyas. Later from 9th century onwards we'll be studying Cholas again, but they would be imperial Cholas. There we will not studying anything about Cheras or Pandyas, but we'll be studying Cholas. You might be familiar with this Dravida style architecture. The famous Dravida style architecture which culminated, which reached its zenith in the period of Cholas, or the navy strength of India reached its zenith in the period of Cholas. But they are imperial Cholas. We'll have to say, we'll be covering them in medieval India, early medieval times. But here we are telling about ancient the southern kingdoms or Cholas. यहाँ हम ancient kingdoms की बात कर रहे हैं. Now let's move to Sangam literature. Very important. ध्यान दीजिए, संगम लिटरेचर कुछ नहीं है, कोई भी डेफिनेशन हार्ड एंड फास्ट नहीं है। वो लिटरेचर, वो कॉर्पस ऑफ मटेरियल जो किस में फॉर्म किया गया था? संगम पीरियड में। संगम पीरियड में जब डिफरेंट पॉइंट्स, सेजेस, किंग्स मिले तो उन्होंने एक कॉर्पस ऑफ लिटरेचर बनाया। तो उस पीरियड, उस संगम लिटरेचर का, उस पीरियड का लिटरेचर जो बना गया, जो हमारे पास कुछ मौजूद है कुछ मौजूद नहीं है, उस लिटरेचर को हम बोलते हैं संगम लिटरेचर। फर्स्ट 3 संगम्स हुए। कितने संगम्स हुए? 3 संगम्स। फर्स्ट संगम का लिटरेचर हमारे पास मौजूद नहीं है। सेकंड संगम में जो लिटरेचर हमारे पास प्रेजेंट है, दैट इज तोलाकपियम। एक ही लिटरेचर। क्या? तोलाकपियम। किसने कंपोज किया था? तोलाकपियार ने। क्या? किसने लिखा था? तोलाकपियम। किसने लिखा था? तोलाकप। और ये है अर्लीस्ट तमिल ग्रामर। किसके बारे में है? तमिल ग्रामर, तोलाकपियम। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जो इसमें कंपोज किया गया था उस लिटरेचर के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ना कि डाइग्रेस हो रहा हूँ, क्योंकि आपका यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, ना कि एक स्पेशलाइज्ड बेस्ड क्वेश्चन, ना कि एक एकेडमिक तौर पे हम इस पीरियड को कैसे देखेंगे, वैसे क्वेश्चन आपको जरूरत नहीं है। आपको इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होनी चाहिए जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करा सके। तोलाकपियम, अर्लीस्ट तमिल ग्रामर, इट वाज रिटन बाय तोलाकपियार। फिर ये किस संगम में लिखी गई थी? सेकंड संगम। फर्स्ट में हमारे पास कुछ मौजूद नहीं है। थर्ड संगम, जो मोस्ट ऑफ द लिटरेचर इस पीरियड का हमारे पास प्रेजेंट है, वो किस पीरियड, किस संगम में लिखा, कंपाइल किया गया था? थर्ड संगम में। वो इस थर्ड संगम में, ये इसी में
दो टाइप्स ऑफ टेक्स्ट प्रेजेंट है, इतु तोगाई एंड पुतु पुतु। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो मगर फिर भी these are 8 anthologies, these are 10 idols। और जो फिर उसके इसी में जो इम्पोर्टेंट हम इम्पोर्टेंट चीज़ों की ये बात करते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज उस लिटरेचर को जो उस लिटरेचर को ये जनरल टर्मिनोलॉजी है। और हमारे पास और एक किताब पाई जाती थी इसी संगम लिटरेचर की, उसका नाम है कुरल। और इस कुरल को क्या कहते हैं? बाइबल ऑफ तमिल लिटरेचर, बाइबल ऑफ तमिल लिटरेचर। बाइबल ऑफ तमिल लैंड और बाइबल ऑफ तमिल लिटरेचर, तमिल लैंड या तमिल लिटरेचर। किसने लिखा था इसको? तिरुवुलवर। किसने? कंपाइल्ड बाय तिरुवुलवर। किस लिए इंपॉर्टेंट है? इट्स अ बुक ऑन पॉलिटी, इट्स अ बुक ऑन स्टेटक्राफ्ट, बुक ऑन पॉलिटी, statecraft। Ethics and social norm। इसके लिए और क्या है? Ethics and social norm। and 3 epics का जिक्र है। ये मैं बात कहूं? आपको अब लास्ट लिख रहे और 3 एपिक्स का जिक्र है इसमें। 3 एपिक्स। एक थी शिलापति करम, शिलापति करम। इसका नाम दूसरा है जिवलेट एंकलेट। क्या है नाम इसका? जिवलेट एंकलेट। किसने लिखी थी ये? लीलांगो अधिगल। किसने? और दूसरी जो थी उसका नाम था मणिमेगला। किसने लिखी थी? सतनारायण। और इसका जो टिंज है ये ज्यादा टिंज टुवर्ड्स बुद्धिज्म है। इसके टिंज टुवर्ड्स बुद्धिज्म। मीन जो इसमें लिखा गया है उसमें थोड़ा टिंज किसकी तरफ होगा? बुद्धिज्म की तरफ। इसका ऑथर है। और तीसरी जो एपिक थी that was शिवागा चिंतामणि, शिवागा चिंतामणि। इसका जो ऑथर था उसका नाम तिरुक्का देवीलाल, तिरुतक दीवार। ये इसका ऑथर था शिवागा चिंतामणि का। और इसका जो टिंज है इट इज टिंज टुवर्ड जैनिज्म।
why does this Sangam literature become important? You may be asking a question to yourself and you will be asking a question to me. Why is this important? Because we get lot of information what was having beyond, what was structured beyond Vindhyas, what was going on beyond Vindhyas. Otherwise we don't have any concrete reference what was going beyond Vindhyas के साउथ हिस्से में, साउथ इंडिया में क्या चल रहा था, उसका हमें कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं थी. दो पॉइंट्स आप लिख लीजिए. दिस संगम लिटरेचर was composed of the Sangam literature was composed of poems and proses that reflected both love and war. मीन्स दोनों का जिक्र किया गया था. जहाँ एक तरफ एक प्यार भरी दास्तान, एक कविता थी, प्यार भरी कविता जिसमें प्यार का जिक्र हुआ करता था कि मेरी वाइफ, इमेजिनेशन थी क्या होगा, जैसे आजकल के हम करते हैं कि इमेजिन करते हैं कि क्या होना चाहिए, मेरा महबूब कैसा होना चाहिए, वैसे ही इमेजिनेशन इनके यहाँ हुआ करती वो मीन्स. मगर दूसरी तरफ इसमें इस बात का जिक्र किया जाता कि अगर मुझे लड़ना पड़े क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, क्या मेरे पास होना चाहिए. तो उसमें इथिक्स, कौन से इथिक्स होने चाहिए, कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, मीन्स उसमें दोनों की रिफ्लेक्शन है. और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दिस लिटरेचर said us about, the Sangam literature said us about various social classes that were present in Sangam period. Its geography, क्या था इस पीरियड की geography, and its various political class. Means ये हमें सोशो पॉलिटिकल और दिस ज्योग्राफी के बारे में कौन हमें इस साउदर्न तमिल लैंड के बारे में बताता है, कौन बताता है? संगम लिटरेचर. नाउ यू आर क्विकली आस्किंग अ क्वेश्चन, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपके पास हम हक है पूछने का, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन पूछ सकते हो. सर आपने तो बता दी थी स्टेटमेंट कि हमें इस संगम लिटरेचर से ज्योग्राफी के बारे में पता चलती है, हमें इस सोशल क्लासेस के बारे में पता है. हमें कुछ बता दीजिए, हमें कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए किस किस्म के. पहला ही चीज़ जो मैं कहूँगा कि संगम लिटरेचर हमें बताता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड क्या थे. इट्स सेड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड. उस लैंड की डिवीजन, उस लैंड की क्लासिफिकेशन और टर्मिनोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू विल हैव टू रिमेंबर दिस. इट गिव अस इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड. Almost 5 division classification. It said us कि forest land कौन था, pasture land कौन था, पुलाव land कौन था, sport land कौन था. ठीक है, मीन्स डिफरेंट किस्म के लैंड हमारे पास मौजूद थे. उन्हीं का जिक्र इसमें 5 डिवीजन क्लासिफिकेशन इसमें लैंड की दी. और साथ ही में इसने हमें डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल क्लासेस की इंफॉर्मेशन दी. हमें बोला कि डिफरेंट क्लासेस क्या प्रेजेंट थे. और ये आपकी टर्मिनोलॉजी बेसिस क्वेश्चंस के लिए जो मैं टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज कर रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. तो इसलिए आप नोट डाउन करेंगे डिफरेंट क्लासेस. यकीन मानिए इसी साल हिस्ट्री ऑप्शनल में ये क्वेश्चन पूछा गया था. आंसर ruling class, vinegar, trade and commerce. टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रेड एंड कॉमर्स.
आपके चेहरों से मुझे सीधे पता चल रहा है कि आप ये बोल रहे हैं सर, आप हर किसी पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, फिर हमें छोड़ना क्या एग्जाम के लिए? आपके लिए मैं ये चीज़ बताता चला हूँ कि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही टच कर रहा हूँ, डिफरेंट बुक्स का इस्तेमाल करके जो आप में वहाँ एग्जाम की इंफॉर्मेशन नेसेसरी है वही इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि और उस तरीके से कि आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो जाए। अदरवाइज अगर हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए हमें हिस्ट्री में इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। आई एम ट्राइंग विद फुल एफिशिएंसी कि मैं वो कंटिन्यूटी ब्रेक करने के बगैर आपको वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता चला जाऊँ। इसलिए आपके लिए जो भी मैं यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ ये आपके लिए आप बसो, आप मान के चलो कि इसी में क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह। वनीकर आपने लिखा वेलावर वेलालर, they were agriculture class or land owning class. Or land owning class. उजावर, जब देखिए 60 की एनसीईआरटी देखिए वहाँ पे ये टर्म्स लिखे हैं। जब एनसीईआरटी पे टर्म्स लिखी है तो आपका क्वेश्चन तो हक बनता है एग्जामिनर का वहाँ से क्वेश्चन पूछने का। उजावर, they were ordinary plowmen, उनके पास छोटे छोटे ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड थे। ऑर्डिनरी प्लोमैन, ऑर्डिनरी प्लोशियर, उनके पास छोटे छोटे लैंड ट्रैक्ट्स पर ज्यादा नहीं। कदसिया, they were agricultural laborers or landless laborers. और अदमाई, they were slaves. ये तो हम साउथ में देख रहे हैं ना ये क्लासिफिकेशन डिफरेंट क्लास की, और यहां से मैं एक थोड़ा हट के जाऊंगा, आपको नॉर्थ की तरह ले जाऊंगा थोड़ा। हम वापस साउथ में अभी जाएंगे क्योंकि हमने तो डिफरेंट क्लासेस की बात की, अभी तो हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी की बात ही नहीं की थी संगम पीरियड की, मगर थोड़ा मैं यहाँ नॉर्थ की तरफ जाऊंगा। कुछ टर्मिनोलॉजी वहाँ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मिली जो इसी के आसपास, अगर वो उसके लिए साउथ में कुछ और टर्मिनोलॉजी थी और नॉर्थ में उसके लिए कुछ और टर्मिनोलॉजी थी। ग्रामा बोजी का क्या मैंने बोला था? ग्रामा बोजी का कौन था? ग्रामा बोजी का was rich land owner and he was also the head of village. किसको बोलते थे नॉर्थ में ग्रामा बोजिका को? हेड ऑफ विलेज एंड रिच लैंड ओनर। इसका पोस्ट जो होता था वो हेरिडिटरी था। क्या था? हेरिडिटरी मींस बाप के बाद उसका बेटा, बेटा के उसके पोता, ठीक है। और दूसरा हमने बोला था गहापति, पता था हमने प्रीमोरियन पीरियड में गहापति। ये मुझे आज बोलना क्यों जरूरी पड़ा? क्योंकि आप आगे जाके एक और टर्म देखोगे गृहपति। मुमकिन है अगर आपने ऊपर से पढ़ा, सही और समझ के साथ नहीं पढ़ा, आप गहापति और गृहपति को कंफ्यूज करके एक ही समझ सकते हो, हालांकि ये दो डिफरेंट चीजें। गहापति जब हमने बोला कि वो एक हाउस होल्ड का हेड था, बताया कि नहीं? हाँ, हाउस होल्ड का हेड था और वो रिच लैंड ओनर था और उसके पास जो लैंड था वो बहुत ही ज्यादा था, लार्ज लैंड ओनर था। गहापति बताइए, इससे पहले ही बताया ना हमने प्रीमोरियन में। मगर आप पोस्ट मोरियन में एक और टर्म देखोगे गृहपति। अगर गहापति बड़ा लैंड ओनर था, ये क्या था? ये स्मॉल लैंड ओनर था। ये आप इंपॉर्टेंट है, आप एनसीईआरटी पे ये टर्म दी है ताकि आप कंफ्यूज ना करो गहापति और गृहपति को। गहापति बड़ा लैंड ओनर था, गृहपति स्मॉल लैंड ओनर था।
तो इसलिए ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मुझे मुनासिब लगा कि मैं आपको ये चीज़ यहाँ बताता चलूँ। और दासा कामाकारी हमने वहाँ बताया था, वो हाँ लैंडलेस लेबरर था बिल्कुल। तो नाउ अगेन लेट्स मूव बैक टू दिस संगम पीरियड। डिफरेंट क्लासेस के बारे में हमने समझा। There were different gods present. संगम पीरियड में तमिलनाडु की बात करें, डिफरेंट गॉड्स प्रेजेंट थे। कौन कौन से गॉड प्रेजेंट थे? मायोन, इंदिरा, मुरुगन, एटस्ट्रा। एंड यहां इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा इनका चीफ गॉड था? मुरुगन इनका चीफ गॉड था। क्या था? मुरुगन इनका चीफ गॉड। मुरुगन, मायोन, वरुणा भी था, मगर मैं दो ही का जिक्र करूंगा क्योंकि इनका चीफ मीन्स मैंने ये दो एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिए क्योंकि मीन्स बहुत सारे गॉड्स प्रेजेंट थे, वो दे वर रेवर्ड, बट चीफ गॉड अमंग देम वाज मुरुगन। और यहां भी वुमेन कंट्रीब्यूटेड टू वुमेन जो पोइट्स थी, they contributed to women poets contributed to sangam literature। means अभी भी वुमेन का एजुकेशन, साउथ में वुमेन का एजुकेशन अभी नेग्लेक्टेड नहीं था। यही इंफॉर्मेशन इससे डिराइव हो रही है ना कि वुमेन की जो एजुकेशन थी वो अभी साउथ में नेग्लेक्टेड नहीं थी, बिकॉज देयर आर वुमेन पोइट्स हु कंट्रीब्यूटेड टू संगम लिटरेचर। और पता है आपको ज्यादा किस वुमेन को ज्यादा इज्जत की जाती थी? जो अपनी लाइफ को पायस और चेस्ट रखती थी। मीन्स उस वुमेन को उसकी चेस्ट थी ताकि वो किसी और के साथ नाजायज संबंध या कुछ ऐसा ना रखे, उस वुमेन को ज्यादातर रेस्पेक्ट किया जाता था। द वुमेन दैट वाज हैविंग चेस्ट लाइफ। हाँ, क्या यहाँ लव मैरिज या पार्टनर को चूज करने की लिबर्टी थी? यस। आप क्या बोलोगे? हाँ। मीन्स अभी तक रिजिडिटी यहाँ प्रेजेंट नहीं आई थी कि जो ब्राह्मणिकल सिस्टम, जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर नॉर्थ इंडिया में डेवलप हो रहा था, अभी उसका इम्पैक्ट ज्यादातर यहाँ प्रेजेंट नहीं था। ये आप समझ सकते? वुमेन could go for love marriage as well as this choose their husband। ठीक है? हाँ। और चौथी बात, यहाँ मगर विडोज की जो हालत थी वो बहुत ही खस्ता थी। विडोज देयर लाइफ वाज मिजरेबल एंड सती वाज प्रेवलेंट। मगर किस सेक्शन में? अपर स्ट्रेटा में। अभी यहाँ 4-fold डिवीजन ज्यादातर कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर में नहीं था क्योंकि नॉर्दर्न ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी से इन्फ्लुएंस अभी पूरी तरह से सोसाइटी नहीं थी। मगर सती के ग्लिम्पसेस हमें मिलते हैं मगर ऊपर के स्ट्रेटा पे। मे बी जो भी आपने अभी क्लासेस देखे, क्या वहाँ सोशल क्लासेस 4 डिवीजन क्लासेस थे? नहीं, हमने इकोनॉमिक स्टेटस पे वो क्लासेस देखे। एक देखा रूलिंग क्लास, एक देखा लैंडलेस क्लास। मीन्स इकोनॉमिक डिस्टेंस एक जितनी ज्यादा थी उस तरीके से क्लासेस बनते जा रहे हैं। अभी हमने 4-fold डिवीजन जो नॉर्थ इंडिया में प्रेजेंट था वैसा कुछ डिवीजन यहाँ नहीं देखा। What about divorce? You said something about divorce. I said widows. The life of widows was miserable. And sati was prevalent in upper strata. What about religion? जहां मैंने गॉड्स का जिक्र किया, रिलीजन का अगर मैं जिक्र करूं तमिलनाडु में इस पीरियड में
Brahmanism as well as Buddhism as well as Jainism was prevalent in this part of the land. Means अभी कोई एक रिलीजन जिसमें शैविज्म या वैष्णविज्म अडॉप्ट नहीं हुआ था, बल्कि तीनों ब्राह्मणिकल रिलीजन जिसमें शैविज्म और वैष्णविज्म था दोनों, और बुद्धिज्म भी था, जैनिज्म भी था। मीन्स यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अभी एक फुली कंसोलिडेटेड रिलीजन नहीं था, बल्कि डिफरेंट रिलीजन्स प्रेजेंट थे। ये चीज आपको समझ आई? व्हाट अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अब हमेशा जब इतनी बड़ी सोसाइटी हो, जब इतना बड़ा किंगडम हो, वहां जरूरी एक चीफ होगा या किंग होगा। किंग के पास डिफरेंट मिनिस्टर्स होंगे, है ना? तो वो उसको गाइड कर रहे होंगे, डिफरेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और डिफरेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को गाइड करने वाले जो है और इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिफरेंट ऑफिशियल्स प्रेजेंट होंगे। तो मीन्स उसी का स्ट्रक्चर जो अभी हमने नॉर्थ में देखा था इससे पहले, कि जो नीचे पहले किंग, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर डिफरेंट ऑफिशियल्स, वैसा ही स्ट्रक्चर। तो उतना इलाबोरेटेड तौर पे नहीं पढ़ना है, डिफरेंट, बिकॉज हियर वी यूज डिफरेंट टर्मिनोलॉजी फॉर डिफरेंट थिंग्स। तो उस टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे मैं आपको वो टर्म्स 2-3 लिखाऊंगा, जिसकी वजह से आपको वो क्वेश्चन कवर हो सकता है। किंग को बोलते थे वेंटम, यहाँ क्या बोलते थे? किंग को क्या बोलते थे? वेंटम। और यही सोसाइटी का हेड हुआ करता था, और गवर्नमेंट का हेड ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज गवर्नमेंट, हेड ऑफ एंड गवर्नमेंट। और जो किंग का जो कोर्ट था, किंग का जो इंपीरियल कोर्ट था, उसको क्या क्या कहते थे? अवई। ये मैं कहता ही नहीं, मुझे क्यों कहना पड़ा? क्योंकि इसके पास डिफरेंट टर्म्स है। अगर आपको बोला जाए, फिर बाद में क्वेश्चन पूछा जाएगा, द अवई इन इंडिया, इन एंशिएंट इंडिया रेफर टू, आप क्या बोलोगे? इंपीरियल कोर्ट। क्या बोलते थे उसको? अवई। पहले ही बता दी मैं, मिलिट्री थी, 4 उसमें सेक्शंस थे, इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स और चैरियट्स का सेक्शन था। हमने देखा संयुक्त ने उसी मिलिट्री का इस्तेमाल करते हुए नॉर्दर्न इन्वेजन किया, वो मिलिट्री अच्छी खासी प्रेजेंट थी। और मैं आपको यहाँ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बता दूं, क्या संगम लैंड में या जिस तमिल लैंड में नॉर्दर्न इन्फ्लुएंस प्रेजेंट था? आप बोलोगे हाँ, इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हुआ था, अभी फुली मगर इन्फ्लुएंस नहीं था, अभी फुली ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस नहीं था, बट स्टार्ट हुआ था। ठीक है? हाँ, नाउ टेक रेस्ट फॉर 2 minutes, we'll go with northern, we'll go back to post-Mauryan development in northern India. So let's continue. Let me take 1 minute break. Give your minds a rest. अपने दिमागों को थोड़ा सा रेस्ट दो। 15 मिनट का वो टॉपिक चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। We're already almost 45 minutes पे हम जा रहे हैं। In terms of religion, Buddhism, Jainism, Brahmanical religion. nationalism, Shaivism. Can we have any more information about Morgan? He was the chief god of Sangam period of Tamil land. Was your Brahminical god? What? No. Brahminical god, when you see Brahminical god, it was not fully established. It had developed into Vaishnavism, Shaivism. The chief gods among those were Vaishnavas, and then the Vaishnava had different avatars. We'll have to study them later in Gupta period. We may not be studying about avatars, but we'll be seeing from now onwards in North India, the Brahminical religion will be the dominant religion afterwards. The development of other sects as well, Shakti, other shamanic traditions will continue further. We'll be observing all that. And about 5-class division of land? 5-class division of land, we'll see forest land,
we'll see plough land I mean agricultural land, then we'll see pastoral land, we'll see this sport land, then we'll see this desert land. Again, let's continue now with post-modern developments. When we started, when we left the topic yesterday, we studied in that topic about the postmodern development. Then we suddenly jumped to this sangam part because it's important. Now again, we'll jump back to postmodern period, which is too lengthier period. It covers almost 6 centuries. So that means we have to deal about those 6 centuries. What happened in these 6 centuries? First thing, we'll be saying about the economic development in the post-modern period. What do you understand by economic? क्या हो रहा था economic development के बारे में? कौन हमें इंफॉर्मेशन देता है ज़्यादातर इस पीरियड की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? कॉइन्स, और उनमें सबसे ज़्यादा हमें कुशाना कॉइन्स, जो कुशाना पीरियड में जो कॉइन्स हमारे पास प्रेजेंट थी, उनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? कि हमारे पास ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ही अरूज पे था. क्या था? बहुत ही अरूज पे. और इस ट्रेड एंड कॉमर्स में बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड वाज सिग्निफिकेंट. और एक्सटर्नल ट्रेड में हम किसके साथ यहाँ ट्रेड कर रहे थे? वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्ट एशिया के साथ इंडो रोमन ट्रेड, और यहाँ साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी हम ट्रेड कर रहे थे. किसके साथ? इस पीरियड में साउथ ईस्ट एशिया आपने इससे पहले देखा? नहीं देखा. यहाँ मगर किसकी ओर जा रहे हैं? साउथ ईस्ट एशिया की. अगर मैं इंडो रोमन ट्रेड की बात करूं, प्लिनी ने यहाँ स्टेटमेंट दी कि सच वाज द balance of trade in favor of India that Rome was drained of its gold. Means Rome से जो gold present था, Rome में जो gold present था, वो कहाँ जा रहा था? इंडिया में. इतना इंडिया के फेवर में बैलेंस ऑफ ट्रेड था. ये स्टेटमेंट बताई ब्लिन ने कि बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज हाईली इन फेवर ऑफ इंडिया, that Rome was drained of its gold. रोम में जो भी गोल्ड प्रेजेंट हुआ करता था, वो कहाँ ड्रेन हो गया? इंडिया की ओर. ठीक है. और क्या बताती है हमें कुशाना कॉइन्स? कुशाना कॉइन्स हमें बताती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हाँ, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें यहाँ जो पता होनी चाहिए वो थी इंपॉर्टेंस ऑफ गिल्ड्स. क्या बोलते थे एंशिएंट हिस्ट्री में गिल्ड्स को? श्रेणीज. ये एसोसिएशन हुआ करता था मर्चेंट्स का, क्राफ्ट्स पर्सन्स का, उनका, ये आप याद रखेंगे, श्रेणीज. किनका एसोसिएशन हुआ करता था? क्राफ्ट पर्सन का, मर्चेंट्स का. इनका डिफरेंट फंक्शन हुआ करता. या तो हमें ये गिल्ड्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दिया करते थे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, या प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल करते थे, या बैंक लाइक फंक्शंस करते थे. क्या करते थे? या ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे. अगर आपको ये सवाल पूछा जाएगा गिल्ड्स के बारे में, द गिल्ड्स ओनली परफॉर्म्ड इकोनॉमिक फंक्शंस, आप क्या बोलोगे? नो, they did not only perform economic functions, but they went beyond that. They, apart from providing economic functions, they also provided functions like training, they also provided functions like banking, they also provide functions like judicial functions. वो means ये आपके लिए important question यहाँ cover हो सकता है. और आपको यहाँ जहाँ हमने ब्रोच, सोपारा, ताम्रलिप्ति, मुजरिस, कावेरीपट्टनम, जिस और कौन था? कावेरीपट्टनम और तो पांड्या का, जहां हमने वो कोरकाई जैसे पोर्ट डिस्कस किए. कौन सी जगह? यहाँ आपको एक पोर्ट का जिक्र
और करना पड़ेगा जो आपकी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। अरिकामेडू लिखिए आप, अरिकामेडू, ये पौंडीचेरी में पोस्ट आजकल की जो पौंडीचेरी है वहां प्रेजेंट, उसको बोलते थे अरिकामेडू, अरिकामेडू। यहां भी डिफरेंट गुड्स आते थे और डिफरेंट गुड्स यहां से जाते थे। ये क्यों इंपॉर्टेंट बन गया? ये इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि यहाँ कुछ हमें चीजें देखने को मिली जो डिफरेंट पोर्ट्स पे हमें देखने को ना मिली। एक तो यहाँ एक मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर है जो वेयर हाउस का काम करता था, मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच एक्टेड एज वेयर हाउस। एंड पोट्री हमें डिफरेंट एरियाज की मिलती थी। यहाँ हमें मेडिटेरियन टाइप ऑफ पोट्री मिलती, मेडिटेरियन की पोट्री मिलती है, और रोम साथ में लिखा आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्री डिफरेंट जगह की, सपोज मेडिटेरियन, ग्लेज्ड पोट्री, एम्फोरिक जिसको कहते हैं। तो और यहाँ जाके हमें मिले रोमन लैंप्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव आल्सो बीन फाउंड हियर। मींस अगर आपको क्वेश्चन आ गया, एक थोड़ा सा छोटा सा पैरा दिया गया कि द पोर्ट which was famous in ancient India, which where different type of pottery was found, and a brick warehouse was found, a massive structure made up of bricks, where of bricks was found, as well as this glassware, Roman lamps, etc. We found at that place. The above paragraph is referring to which of the ports? अब किसके बारे में नाम लिखेंगे? अरिकामेडू। अरिकामेडू कहाँ है? पौंडीचेरी में। आजकल की जो पौंडीचेरी है उसको एंशिएंट नेम क्या था? अरिकामेडू। ठीक है, ये हो गया। I think we'll conclude here today, but before conclusion I will make an important request. I would have gone with art and architecture developed in post-Mauryan period, which is very important. Literature, art and architecture. But I would like you to request, before I discuss here, you will go through this lesson or chapter, 4th chapter of your folk arts book, part 1. Then and only I will discuss that part, because that part needs your understanding as well. I cannot make impact unless आपने वो अच्छे से पढ़ा हो, unless कि आपके अंदर वो कुछ चीज़ें जज्ब हो गई हो, assimilate हो गई हो, तब जाके मैं आपको critically वो चीज़ें समझा सकता हूँ। Otherwise आपका वो अगर मैं ऐसे ही समझाऊँ तो वो आप बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाएंगे उस पीरियड में। तो मैं कल रिक्वेस्ट करूँगा, मैं कल वो क्लास तब ही लूँगा जब आप पहले चैप्टर 4 जो फोक आर्ट्स की बुक है और थोड़ा बहुत आप दिस नितिन सिंघानिया की बुक पे देखेंगे डिफरेंट केव्स के बारे में, अजंता केव्स, बरोबर केव्स, उदयगिरी केव्स, उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखेंगे ताकि हमारे लिए वो आसान हो। अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन आपके लिए फ्यूटाइल तब तक है जब तक वो आप इंफॉर्मेशन खुद जाके आप थोड़ा अंडरस्टैंड उसके बारे में ना करें। ओके, लेट्स कंक्लूड टुडे पीसफुली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।